Good afternoon, everyone. Welcome to the class. I hope I'm clearly audible and visible. Hi, Ayush. Good afternoon. Yeah, so I am clearly audible and visible. Welcome to the class, Bacho. Welcome to the most awaited session. Today I'm going to tell you the important questions of Viva, which can be asked in chemistry practical. As we all know, we are approaching towards the board examination, and soon your schools will be starting with the practicals for the board examination. And it's very important for you to score good marks in your practicals because 30 marks are from the practicals only. That's, I think, a huge percentage that you have to procure in your practicals. And बच्चों ये free के marks हैं. It's not very difficult. कुछ set 20-30 questions है which you have to remember, out of which most of the questions are actually from your most क्या सारे के सारे are from your text only, the ones which you have already done with me, right? So that's what we are going to discuss today. So फटाफट से अपने friends को ही बुला लो. Good afternoon, Purva. And do like this session, bachcho. So students, welcome to the class. I hope everybody is doing fine and I'm clearly audible and visible to you all. So let's get started. So bachcho, my name is Khushboo Shah and I teach chemistry to class 11 and to class 12 students on the Academy platform. I have done MSc in Organic Chemistry from Punjab University, Chandigarh, B.Ed in Maths and Science from Punjab University, Patiala. I've also qualified seated. I've been teaching chemistry for past 9 years now and our goal is to make chemistry fun together. So, bachos, first of all, let us look at the checklist for the chemistry practicals. First and foremost, you will not go without a lab coat. If you are not having a lab coat, bacho, if you don't have the lab coat with you, at your practical day, you won't be allowed to enter the practical or the laboratory or the exam room. So lab coat is really important. This is one thing which is very much required at your end. So lab coat pakka leke jana. Secondly, बच्चों, your practical file should be completed and it should be properly covered. अगर कवर फट रहा है थोड़ा सा, प्लीज उसे दोबारा से रिकवर करो, ठीक है? अच्छे से कवर करो. कोई फैंसी सा कवर करने की जरूरत नहीं है. ब्राउन कलर का जो कवर आता है उसे नीटली कवर करो बच्चों. योर प्रैक्टिकल फाइल शुड बी नीट एंड क्लीन, ठीक है? प्रेजेंटेबल होनी चाहिए. थरो नॉलेज ऑफ दी एपरेटस, वो मैं आपको एंड में पूरा एपरेटस दिखा दूंगी किसको क्या कहते हैं, लाइक कोनिकल फ्लास्क, बिरेट, पिपेट. आई नो यू ऑल माइट बी नोइंग ऑल ऑफ दीज. स्टिल द एग्जामिनर कैन आस्क अच्छा ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, इज दैट अ टेस्ट ट्यूब, इज इट अ कैपिलरी, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे. तो लास्ट में आई हैव अपलोडेड सम एपरेटस फॉर यू, सो यू कैन चेक दैट आउट एट द एंड ऑफ द सेशन. Appropriate stationery आपके पास होनी चाहिए, पेन, पेंसिल, एवरीथिंग, बिकॉज यू विल बी गिवन अ रिटन टेस्ट एज वेल, राइट? वो मैं आपको बता देती हूँ आपका प्रैक्टिकल कैसे होगा. I hope you all have done your project also which you have been provided by your school. तो project भी लेके जाना है. अगर submitted है तो बहुत बढ़िया. Otherwise, if it is with you, so do take it with you because the examiner वाइवा लेते हुए एक आधा क्वेश्चन आपके प्रोजेक्ट में से ही पूछते हैं. ओके, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून. ठीक है बच्चों, सो ये सब कुछ है. अब प्रैक्टिकल एग्जाम जो होता है उसका ड्यूरेशन क्या रहता है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो बच्चों पे अटेंशन. ड्यूरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल इज ऑफ 2 आवर्स, ठीक है? 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा. अब टाइमिंग शिफ्ट दैट ऑब्वियसली डिपेंड्स अपॉन योर स्कूल्स बच्चों. So duration will be of 2 hours. Okay, and what will be asked in this बच्चों? First of all, obviously you will be doing practical. ठीक है, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम दिया जाएगा टू परफॉर्म. देन बच्चों apparatus familiarity, ये 5 मार्क्स की है बेटा. ये आपको पता होना चाहिए व्हाट इज व्हाट, ये चीज क्या है, ये चीज पिपेट है, ये चीज ब्यूरेट है, ये चीज कोनिकल फ्लास्क है, ये राउंड बॉटम फ्लास्क है. सबका नाम आपको बताना चाहिए. दैट इज ऑफ 5 मार्क्स. ठीक है बच्चों. जो आपका प्रैक्टिकल नोटबुक है दैट इज ऑफ अगेन 5 मार्क्स. एक आपको रिटन टेस्ट दिया जाएगा बच्चों, रिटन टेस्ट विच विल बी ऑफ 15 क्वेश्चंस. ठीक है, कितने क्वेश्चंस होंगे? 15 क्वेश्चंस होंगे, 15 क्वेश्चंस होंगे, out of which you only have to solve 10 questions containing 1 mark each, meaning this is of 10 marks.
कुछ बाहर से नहीं आएगा, यही सब कुछ आएगा जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अभी, ठीक है। प्रैक्टिकल से रिलेटेड ही आएगा बच्चों सब कुछ। सो रिटन टेस्ट इज ऑफ 10 मार्क्स, एंड जो आपका वाइवा है बच्चों, दैट इज ऑल्सो ऑफ 10 मार्क्स। तो ये आपके बन गए टोटल 30 मार्क्स। 10 + 10 20, 20 + 10 30, दिस इज टोटल ऑफ योर 30 मार्क्स। सो 2 घंटे का प्रैक्टिकल है बच्चों। Some schools actually tell you in advance that okay, this practical will be asked. Mostly कौन कौन से प्रैक्टिकल पूछे जाते हैं मैं आपको बता देती हूँ। एक तो एसिड बेस प्रैक्टिकल के बारे में पूछा जाता है सॉल्ट एनालिसिस में, ठीक है। सेकंड टाइट्रेशन, ये पेट है दो जो हमेशा पूछे जाते हैं, सो मे बी आपके स्कूल से भी यही पूछा जाएगा। इट्स 99% की एक आपको एसिड बेस रेडिकल निकालने को कहा जाता है, सेकेंड आपको कहा जाता है टू डू द टाइट्रेशन ऑफ, मोस्टली केएमएनओ4 टाइट्रेशन ही होती है। तो दो प्रैक्टिकल्स आपको परफॉर्म करने के लिए दिए जाएंगे। मोस्टली आपके पास 1 hour 1 hour 15 minutes होता है टू परफॉर्म प्रैक्टिकल। मैं 1 hour 15 minutes क्यों कह रही हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम 10-15 minutes आर गॉन इन वाइवा एज वेल, ठीक है। तो आप आधा घंटा 30 minutes तो यू आर डूइंग योर रिटन टेस्ट, तो आपके पास बचा 1 hour 30 minutes, out of which 10-15 minutes are gone in Viva. So you have to keep in your mind you will be asked to perform 2 practicals. तो थोड़ा उसको ध्यान में रखना, okay? Exactly, exactly. Right, बच्चों? So this is the distribution. एक बार let's go over it again. Some students are joining in now. Duration is of 2 hours. ठीक है, 2 घंटे का एग्जाम होगा. It will be of 2 hours. It is of 30 marks. How it is distributed? Written test, in which you have 15 questions, out of which you have to do 10 questions containing 1 mark each. So that means it is of 10 marks. Viva, again 10 marks. Then you have your practical notebook, which is of again 5 marks, and apparatus familiarity, that what is this apparatus and all that, that is again of 5 marks. तो आगे आपके पूरे 30 marks under 2 hours. Let's get started now. This I have heard so many times. चलो. Let's start बच्चों. Question number 1. What is a radical? Who can tell me in the chat what is a radical? मैं आपको ये बताती हूँ, दो तरह के होते हैं एसिड बेस रेडिकल, शायद इससे आपको कोई आइडिया मिले. What is a radical? Hi Asha. Sorry. Asha. Yes. Hi Asha. What is a radical बच्चों? आपको पता है ना सॉल्ट क्या होता है ना? सॉल्ट के दो पार्ट्स होते हैं, एसिड एंड बेस. So the salt, the radical which is derived from the acid is known as acid radical, and the part which is derived from a base is known as basic radical. बात समझ में आई? ठीक है बच्चों. मोस्टली जो बेसिक रेडिकल होता है दैट इज अ कैटायन, एसिडिक रेडिकल इज अ एनायन. So what is a radical? Question तो था मैम, टाइप्स नहीं पूछे थे. Question था what is a radical? Any charged species which contains which behaves as a separate species containing a charge, that is known as a radical. It is of two types, acid and base. Basic radicals are always cationic or positive charge. Acidic radicals are always anionic. I hope that it is clear. Of course beta, of course. Is it clear बच्चों? So radical is defined as an atom or a group of atom. Radical, properly लिख भी लो बेटा. Please make your notes. ये क्लास दोबारा नहीं होगी and these will be asked in the examination. ठीक है, हमने भी यही क्वेश्चंस पूछे, हमसे भी यही क्वेश्चंस पूछे गए, आपसे भी यही पूछे जाएंगे. ठीक है. So radical is an atom or a group of atom. I hope you are writing. Which carries charge. ठीक है बच्चों. And behaves as a single unit in the chemical reaction. It is of two types, acid radical, basic radical. Basic is always positive, acid is always negative. I hope that this first question is clear bachcho. Should we move on to the next one? Everybody has written?
बेटा लिख लो, आई एम राइटिंग वेरी स्लोली, स्क्रीनशॉट्स मत लो, कितने स्क्रीनशॉट्स लोगे, तो प्रॉपरली मेक नोट्स ऑल्सो। ये जो क्वेश्चन आंसर्स है आई विल स्कैन देम, ठीक है, एंड मतलब मैं ये जो स्लाइड्स है आई विल अपलोड इट ऑल्सो ऑन माई कम्युनिटी, ठीक है। सो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन दी अन अकेडमी ऐप ऑल्सो। ये जो आज की पीडीएफ है दैट आई विल अपलोड ऑन द कम्युनिटी, ठीक है, राइट। Which radical can produce carbon dioxide on heating? Can you think of any radical which can produce carbon dioxide on heating? I think everybody knows this. Which can produce carbon dioxide on heating? Carbonate. CO3 2 negative. This produces CO2 on heating. Okay. चलिए बच्चों, moving on. Let's see, Ayush. There are 30 questions, so I will try to wind it up under 1 hour, but it can extend. What is aqua regia? बच्चे तो बच्चे को पता होगा. What is aqua regia? It is a mixture of concentrated HCl and concentrated HNO3 in the ratio 3:1. Very important. Right, I hope that this is clear to everybody. Let's move on to the next one. Next one is very, very important, bachcho. That is flame test. Flame test, how many of you have done in your school laboratories? Flame test. किस किसने फ्लेम टेस्ट किया है बेटा, या पता है इसके बारे में? आपने देखा होगा ना, फ्लेम टेस्ट में एक रॉड होती है, उसके ऊपर एक वायर होती है, ऐसे लूप बना होता है ना, ऐसे लूप बना होता है, एंड दैट यू एक्चुअली डिप इनटू योर मेटल, जो भी आपको टेस्ट करना है, एंड देन यू सब्जेक्ट इट टू द फ्लेम, राइट, ऐसे, इस तरीके से. So colored flames आते हैं, and by the color of the flame you can tell which particular element is present. For example, lithium produces red magenta flame, sodium produces yellow flame. Sodium का बहुत बार पूछते हैं. Which flame is produced by sodium? That is yellow. Potassium produces violet red flame, rubidium gray purple, cesium violet, calcium red orange, strontium bright red, barium green, iron gold, phosphorus plain blue green, zinc aquamarine, lead pale green or gray color, selenium bright blue, antimony pale green, arsenic blue and manganese lime green. अब आप सोचोगे मैम इतना सारा याद करना है, मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से याद करने हैं. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, कैल्शियम, बेरियम, आयरन. बहुत है, ठीक है. These are more than enough. Still just go over the others also so that you keep it in your mind, but ये बहुत है. तो बेटा which wire do you use? अच्छा पूर्वा आपने किया है ये प्रैक्टिकल, तो बताओ कौन सी वायर आप यूज करते हो. Which wire do we use while performing flame test? How many of you know that? You use platinum wire. And that is the next question. अगर आपसे फ्लेम टेस्ट के बारे में पूछना शुरू किया एग्जामिनर ने, तो आपको पूरा पूछेंगे. फ्लेम टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हुए मैंने अभी बता दिया. तो उसमें जो लूप बनाते हैं ना, दैट इज ऑफ प्लैटिनम वायर. क्वेश्चन इज व्हाई, कोई और वायर क्यों नहीं यूज कर रहे हो? The answer is platinum wire doesn't react with flame and doesn't impart any color to the flame. अगर हम कोई और वायर लेंगे ना बेटा, तो अपना भी तो कलर इम्पार्ट करेगा फ्लेम को. प्लैटिनम ऐसा कुछ नहीं करता. प्लैटिनम जो है वो अपना कलर इम्पार्ट नहीं करेगा टू द फ्लेम. That's why we can easily use it. And जो flame आ रही है, that is only and only because of the element, because it doesn't impart any color to the flame. Because it's not that reactive. No, it doesn't react with acid bases that easily. तो वो रिएक्ट करेगा ही नहीं इतने टेम्परेचर पे, तो वो कलर भी नहीं इम्पार्ट करेगा बेटा. दैट्स व्हाई, दैट्स द रीजन. आई होप दैट इट इज क्लियर टू एवरीवन. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6.
हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल मी नेस्लर्स रिएजेंट? अच्छा रिएजेंट मत बताओ, ये बता दो किसको टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं नेस्लर्स रिएजेंट? नेस्लर्स रिएजेंट इज यूज्ड टू indicate whose presence? अमोनिया। एन से नेस्लर, एन से अमोनिया। एन से अमोनिया नहीं, आई NH3। ठीक है, तो इट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। व्हाट इज नेस्लर्स रिएजेंट? बेटा आपने ना ये देखा हुआ है इन योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर, क्वेश्चन था ना, K2HgI4, दिस इज नेस्लर्स रिएजेंट ओनली। ठीक है, right? So this is Nestler's reagent. I hope that question number 6 is also clear to you all. Please note it down. अच्छा बच्चों, आपने वो एक प्रैक्टिकल फाइल में बैक में ना एक ये बनाया होगा दैट यू नो दीज आर द केटायंस, दीज आर द एनायंस, व्हिच टेस्ट कैन डिटेक्ट दीज केटायंस, दीज एनायंस, बनाया है ना सब लोगों ने? हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कौन से एसिडिक रेडिकल्स, व्हिच एसिडिक रेडिकल्स कैन बी डिटेक्टेड बाय डाइल्यूट H2SO4? Which acidic radicals can be detected by dilute H2SO4? Who can answer me this? बहुत ही कॉमन है बेटा, सल्फाइड एंड कार्बोनेट, दीज टू कैन बी डिटेक्टेड बाय dilute H2SO4। लिख लो, ये तो डायरेक्टली आपके एनालिसिस में से है, ऑब्वियसली यू माइट हैव डन इट। दिस क्वेश्चन I've actually taken from directly from your analysis only। आपके पास एनसीईआरटी की मैनुअल होगी ना बेटा, बस वही आपने करनी है, दैट यू हैव टू गो थ्रू थॉरली। एनसीईआरटी मैनुअल, इफ even if you don't have, the PDF is available online free of cost, you can check that out। okay, okay, question number 7 is also clear। Let's move on to question number 8। ये कितनी बार किया है हमने एल्डिहाइड कीटोन्स का कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में। what is टॉलेंस रिएजेंट? बेटा अब ये आप मुझे बताओ, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने दे दिया है। नाउ आई वांट यू टू टेल मी व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट। यस, is it ammonical solution of silver nitrate? It is also known as silver mirror test, है ना? Who can give this test? All kinds of aldehydes can give, then alpha hydroxy ketones can give। पढ़ा है ना बच्चों सबने ये? right, formic acid also can give। but है क्या टॉलेंस रिएजेंट? what is टॉलेंस रिएजेंट? it is ammonical solution of silver nitrate। ammonical solution of silver nitrate। बेटा प्लीज डोंट स्पैम, प्लीज डोंट स्पैम। ammonical solution of silver nitrate, what is the formula बच्चों? AgNH3 whole twice OH। this is your tolerance reagent। पूरा प्रॉपर बता दिया। अगर आपको मतलब कुछ पूछना शुरू करेंगे ना तो आपको पूरा A to Z पूछेंगे उसके बारे में। ये टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन एंड यू नो एवरीथिंग अबाउट बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर, ये मुझसे पूछा गया था मेरे वाइवा में, बिकॉज माय प्रैक्टिकल वाज आल्सो रिलेटेड टू दैट ओनली। सो उससे भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो सकता है, बट कुछ भी रैंडमली आपसे पूछ सकते हैं। दीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो टॉलेंस रिएजेंट बहुत बार बहुत बच्चों से पूछा जाता है, टॉलेंस भी एंड नेक्स्ट क्वेश्चन फेलिंग भी। But you know that failing test or failing solution actually is a mixture of two solution, failing solution A, failing solution B। I want to ask you one thing, whether these two solutions are mixed in equimolar concentration or different concentration? Is failing solution A and failing solution B mixed in different concentration or equimolar concentration? Yes, please answer।
It's mixed in, yes, equimolar concentration. Very good. It's mixed in equimolar concentration. But your failing solution A is hydrous copper sulfate, and failing solution B is Rochelle salt, or also known as sodium potassium tartarate. Now they can ask you the formula of this: CH, CH, OH, OH, COONA, COOK. So these two are mixed in equal concentrations. Okay. Now, bacho, this test is used to distinguish between an aliphatic aldehyde and an aromatic aldehyde. Matlab, this is a very weak oxidizing agent. So benzaldehyde doesn't give this test, or any ketone also doesn't give this test. It is only and only given by aliphatic hydrocarbons. Benzaldehyde does not give this test. Yes, beta, yes. It is for boards Viva. Yes, beta, yes. Moving on, question number 10. Sorry. What is sodium nitroprusside? What is sodium nitroprusside? अच्छा चलो, नहीं पता फॉर्मूला, ये बता दो किसके लिए यूज होता है. इट इज यूज टू डिटेक्ट whose प्रेजेंस, ये बता दो मुझे. इट इज यूज टू डिटेक्ट सल्फाइड आयन प्रेजेंस. ये आपने वही कंफर्मेटरी टेस्ट में पढ़ा होगा बेटा. This is used in sulfide ion presence. I mean, to test the presence of the sulfide ions. Right, बच्चों? Now, what's the formula? Na2. Yes, बेटा, yes. बार बार repeat हो रही है क्या चार्ट? Anyways, so this is the formula, बच्चों. Na2 FeCN5NO. This is the formula of sodium nitroprusside. Okay, it is used to detect the presence of sulfide ion. And bachcho, when sulfide ion is present, it gives violet coloration. Okay, what is the standard solution? थोड़ा titration की तरफ बढ़ते हैं. What is a standard solution, बच्चों? What is a standard solution? Standard solution is that solution whose strength is known. A solution जिसकी strength हमें पता है, that is known as standard solution. Now who can tell me what is strength? ये तो calculate किया ही होगा बेटा आपने. Volumetric titrations में you must have calculated strength. So can you please tell me what is the formula of strength? Amount of solute in gram upon per liter of the solution. That's strength. ठीक है, दिस इज स्ट्रेंथ बेटा. स्ट्रेंथ तो आपको ऑब्वियसली यू हैव टू कैलकुलेट इट इन योर प्रैक्टिकल्स आल्सो. प्रैक्टिकल में कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वाइवा में तो ऑब्वियसली पूछ ही सकते हैं. I hope that this is clear. What is strength, बच्चों? Amount of the solute present in grams upon or present in the volume of the solution in liters. Okay, that's standard solution. Yes, exactly. Not number of moles बेटा, amount. अच्छा, डेफिनेशंस तो बेटा सबको आई थिंक ये आती हैं. नॉर्मैलिटी, मोलालिटी, मोलारिटी, फॉर्मेलिटी बहुत बार पूछते हैं. ठीक है, जो पहले पहले रोल नंबर्स होते हैं ना, उनसे यही पूछते रहते हैं. नॉर्मैलिटी बता दो, मोलारिटी बता दो, मोलारिटी बता दो, फॉर्मेलिटी बता दो. अच्छा, ये पूछ लेते हैं मोलारिटी और फॉर्मेलिटी में डिफरेंस क्या होता है. बेटा, मोलारिटी एंड फॉर्मेलिटी एक्चुअली सेम ही है. इट्स जस्ट दैट इन फॉर्मेलिटी
you calculate the molarity for the ionic compounds. उसमें हम फॉर्मूला मास निकालते हैं ना, इसमें मोलर मास निकालते हैं, इसमें हम फॉर्मूला मास निकालते हैं. फॉर्मूला मास इज कैलकुलेटेड फॉर आयोनिक कंपाउंड्स. सो आयोनिक कंपाउंड्स की जो मोलारिटी कैलकुलेट करते हैं ना, वो फॉर्मेलिटी ही होती है. ओके राइट. ये है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ये है नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सोल्यूट. This is also number of moles of the solute, but in volume of the solution this is in the weight of the solvent, and ये same है, बस formula mass use करेंगे. I hope that this is clear to everybody. Normality, molality, molarity, formality, ये चार definitions पक्का आएंगी. Question number 13, acidity and basicity. बच्चों acidity we define for base, basicity we define for acid. I know confusing, but कोई बात नहीं. So what is acidity? Acidity is number of replaceable OH negative ions. एक base में कितने OH negative हम replace कर सकते हैं, that is acidity. And basicity is number of replaceable H positive ion. In an acid, how many H positive ions we can replace, that is basicity. Like for example, H2SO4. That's a dibasic acid. इसकी बेसिसिटी कितनी है? 2. ठीक है. अच्छा, डिफाइन टाइट्रेशन. तब से मैम आप बोले जा रहे हो टाइट्रेशन 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 होती क्या? हु कैन टेल मी व्हाट इज टाइट्रेशन इन सिंपलेस्ट पॉसिबल लैंग्वेज? आई कैन वेट. वाटर ब्रेक ले लेते थोड़ा सा. चलो बेटा, चैट में जल्दी से बताओ व्हाट इज टाइट्रेशन. सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, कोई रटी हुई डेफिनेशन नहीं चाहिए मुझे. बताइए. टाइट्रेशन में बेटा एक लिक्विड लेते हैं, उस लिक्विड में कितना अमाउंट ऑफ जो भी आप रिएक्ट करवाना चाहते हो, जो भी आप फाइंड आउट करना चाहते हो, द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन दैट लिक्विड इज एक्चुअली डिटरमाइंड वाया टाइट्रेशन. ठीक है. अब कैसे करते हैं हम, उसमें हम क्या करेंगे, हम we make it react with the some other compound, and then we check how much of that liquid is required to react with the other compound completely. That is known as titration. Exactly, but whose? The amount of the substance present in the liquid. So let's write down the definition now, bachcho. Exactly, Ayush. The process of finding out, अभी भी कुछ बच्चों का चार्ट आ रहा है. द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट. कोई बात नहीं बेटा, नाउ यू कैन राइट और यू कैन स्टिल सेंड मी द चैट if you're typing it down. How much of a particular substance is in a liquid by measuring how much of another substance is required to react with it completely. Right? मतलब हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, अच्छा एक सोल्यूशन में इतना कंपाउंड प्रेजेंट है, वी विल रिएक्ट इट विद सम नोन मास ऑफ द अदर कंपाउंड. तो उसका मास नोन होगा, एंड देन विद द हेल्प ऑफ स्टोइचियोमेट्री वी कैन डिफाइन, अच्छा इसके नोन मास के लिए इतना लिक्विड लगा है, तो इस लिक्विड में कितना ज्यादा अमाउंट लगेगा टू रिएक्ट विद दैट पर्टिकुलर कंपाउंड कंप्लीटली. ठीक है. तो इट इज अ वे ऑफ फाइंडिंग आउट द कंसेंट्रेशन ऑफ एन अमाउंट ऑफ सम पर्टिकुलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन द लिक्विड. गुड आफ्टरनून बेटा. सो दैट्स टाइट्रेशन बच्चों, ये करते हो आप. ठीक है. दैट्स टाइट्रेशन कि उस लिक्विड में का कितना अमाउंट विल बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद द अमाउंट प्रेजेंट इन दैट कोनिकल फ्लास्क. ओके. चलो
What is an indicator? बेटा indicator वो होता है which indicates right, which indicates by changing its color at the end point, है ना, जिसपे कलर चेंज ऑब्जर्व किया जाता है एट द एंड पॉइंट. व्हाट इज एंड पॉइंट? अब आपसे क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं. आपने कोई वर्ड बोला, आप उसको जो भी आप सेंटेंस बोल रहे हो ना, बड़ा ध्यान से बोलना. दैट इफ यू यूजिंग अ सेंटेंस, चलो आपने बोल दिया कि इंडिकेटर ऐसा सब्सटेंस है व्हिच चेंजेस इट्स कलर एट एंड पॉइंट, सो वी नो दैट ओके सम रिएक्शन इज हैपनिंग. सो क्वेश्चन एकदम से उड़ता हुआ आ जाएगा, बताओ एंड पॉइंट क्या है? एंड पॉइंट है दैट पर्टिकुलर स्टेट एट विच द रिएक्शन इज कंप्लीटेड. जब रिएक्शन कंप्लीट होगी उस स्टेट को कहते हैं एंड पॉइंट. ठीक है. इंडिकेटर की एग्जांपल दे दो बेटा, बहुत सारे इंडिकेटर है, प्लीज राइट इट डाउन इन द चैट. बड़े सुस्त हो रहे हो आज तुम चैट में. जल्दी से इंडिकेटर की एग्जांपल दो मुझे इन द चैट बच्चों. एनी 2-3 इंडिकेटर्स. बहुत टाइम से बचपन से पढ़ते आ रहे हो. यस बच्चों, बहुत सारे इंडिकेटर्स पढ़े हैं बेटा. बताओ कौन कौन से इंडिकेटर्स? फिनॉल फथलीन, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल येलो, बताओ भाई. राइट. चल. So yeah, this is also done. Now let's move on to the next concept. Which indicator? बहुत important question है ये, पक्का आएगा. Which indicator is used in KMNO4 titration? चलो guess करो. Which indicator is used in KMNO4 titration? Methyl orange. Okay. Keep guessing. Keep guessing. No. No indicator. No indicator. Yes, Purva. It's a self indicator. ये खुद का ही कलर चेंज कर लेता है. It's a self indicator. You don't require an indicator in this. Very nice. Very good. ठीक है. Very good. No, it's a self indicator. No indicator is used in this. कभी देखे कि MnO4 टाइट्रेशन में कुछ इंडिकेटर ऐड करते हुए, या किया ही नहीं है प्रैक्टिकल? चलो नहीं किया तो बताती, कोई इंडिकेटर नहीं ऐड किया था कि MnO4 एक्ट्स एज अ सेल्फ इंडिकेटर. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, मूविंग ऑन. लूकस रिएजेंट. बेटा अब रिएजेंट्स की बात कर लेते हैं. एक मैंने क्लास ली थी, स्पेशल क्लास ली थी, इन विच आई टॉट यू डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिएजेंट्स एंड व्हाट आर दे यूज्ड फॉर. याद है सभी को वो क्लास? डिस्टिंक्शन की क्लास ली थी मैंने, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट की. इन दैट वी डिड विक्टर्मियर टेस्ट, लूकस टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट, सब टेस्ट किए थे हम लोगों ने. Oh, maybe it's that. So these all tests we have done in the special class, and I will post that link in my Telegram as well as in my community, so you all can watch that. तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. टेस्ट के जो रिएजेंट्स है दैट कैन आल्सो बी आस्क्ड. ओके, मूविंग ऑन. व्हाट इज लूकस रिएजेंट? तो मैंने ये सब रिएजेंट्स उसमें करवाए हुए हैं, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट सेइंग दैट. Yes, Purva. ZnCl2 plus HCl. That's Lucas reagent. Very good. Now, can you tell me, it is used to test the presence of what? It is used to detect the or distinguish between 1, 2 and 3 degree alcohol बच्चों. अब ये बताओ 1 डिग्री अल्कोहल के साथ लूकस रिएजेंट क्या करता है? What is the indication? What is the indication बच्चों 1 डिग्री अल्कोहल के साथ? Turbidity appears? नहीं बेटा, turbidity doesn't appear. No turbidity.
Turbidity appears after 5-10 minutes. Immediate turbidity. ठीक है, दैट्स लूकस रिएजेंट. Victor Mayer test के results mostly are asked because the reagent and all that is not in the syllabus, but still मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है, पता होना चाहिए आप लोगों को. So I've taught this in my distinguishing test class, so do check that out. Again, बच्चों, it is used to test the presence of 1, 2 and 3 degree alcohol. So can anybody tell me the color change? Exactly, बेटा, exactly. 1 degree अल्कोहल में इट टर्न्स रेड. विक्टर मेयर की बात हो रही है, ठीक है. 2 डिग्री में इट टर्न्स ब्लू एंड 3 डिग्री में इट रिमेन्स कलरलेस. ठीक है, note it down, the end points of the Victor Mayer test, very important. ना बच्चों, नेक्स्ट इज शिफ्ट रिएजेंट. मोस्टली शिफ्ट रिएजेंट का कुछ नहीं पूछते हैं, बस का स्ट्रक्चर पूछते हैं. आई हैव मेड द स्ट्रक्चर ओवर हियर. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट एट योर होम. एंड शिफ्ट रिएजेंट इज डिफरेंट फ्रॉम शिफ्ट बेस. ठीक है, ये शिफ्ट बेस है. दिस यू हैव डन इन एल्डिहाइड कीटोन्स वाला चैप्टर पे एक टेबल है, तो वहां पे आपने शिफ्ट बेस किया था. शिफ्ट रिएजेंट इज टोटली डिफरेंट. तो ये शिफ्ट रिएजेंट है बच्चों. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, यू हैव टू प्रैक्टिस इट एट होम. They will ask you, they will give you a piece of paper, अच्छा इस पे shift reagent बना के दिखाओ. You have to make it. हाँ, okay, just a second बेटा. नहीं बेटा, ब्लू कलर ही था, प्लीज करेक्ट इट. ठीक है, इट वॉज ब्लू ओनली, प्लीज करेक्ट इट. शिफ्ट रिएजेंट बना लिया बच्चों? हैव यू टेकन स्क्रीनशॉट लेके बना लिया? ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द शिफ्ट रिएजेंट. वैसे तो आई थिंक एवरीबडी नोज व्हाट आर ग्रुप 1, 2, 3, 5 केटायंस. ठीक है, फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा याद होना चाहिए व्हिच आर ग्रुप 1 केटायंस, ग्रुप 2 केटायंस, ग्रुप 3 केटायंस, ग्रुप 4 केटायंस और ग्रुप 5 केटायंस. ठीक है, तो ये सब के मैंने यहाँ पे लिस्ट दे दी है बच्चों. ग्रुप 1 केटायंस सिल्वर, देन वी हैव मर्करी, लेड, ये सब ग्रुप 1 केटायंस है. ग्रुप 2 केटायंस, ये सब कुछ मैंने लिस्ट दे रखी है. So please go through this list. जब just आपको नाम याद होने चाहिए. This is also present in your sorry practicals. जाने practicals बना रहे होंगे ना, उसमें ग्रुप 1 ग्रुप 2 लिखे हुए हैं, आपने देखा है ना ये. तो वही आपके एनसीईआरटी में से मैंने कॉपी पेस्ट किया बच्चों, जो एनसीईआरटी की आपकी बुक है ऑफ दी प्रैक्टिकल मैनुअल. सो मैंने वहीं से उठाया ये. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेम्बर कि कौन से ग्रुप 1 है, कौन से ग्रुप 2 है, कौन से ग्रुप 3. दे कैन आस्क यू, अच्छा बताओ कोई भी दो मुझे ग्रुप 2 के टाइम्स. आप बोल दोगे बिस्मथ 3 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव. ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखने पड़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट के टाइम्स. राइट राइट बच्चों. ठीक है, ग्रुप 3 के टाइम्स याद रख लो, ग्रुप 4 के दो दो तीन तीन याद रख लो, मोर देन ना. ब्रेडीज रिएजेंट आपने पढ़ा हुआ है ये, बट आपको पता नहीं है. ब्रेडीज रिएजेंट इज 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन. दैट इज ब्रेडीज रिएजेंट. इसी को ही ब्रेडीज रिएजेंट कहते हैं. ठीक है, न्यू सेशन ऑफ क्लास 12th आर यू आस्किंग बेटा? पहले क्लास 11 के एग्जाम तो दे दो. इट विल बी स्टार्टिंग वेरी वेरी सून. ओके, एक तो पेट क्वेश्चन रहता है सब एग्जामिनर्स का, मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला बता दो, पोटाश एलम का फॉर्मूला बता दो. कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट आर दीज? मतलब ये होते क्या है? सुना होगा ना, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इनका नाम सुना हुआ है, तो होते क्या है ये, पहले तो ये बताओ मुझे.
What are these? Can anybody tell me what are these? मोहर, salt, potash, alum. इसका ना डिफरेंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है. कल मैंने कहाँ पे टेलीग्राम में पोस्ट किया था डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस. देखा था सभी ने? दीज आर डबल सॉल्ट्स बच्चों. ठीक है, दीज आर डबल सॉल्ट्स. तो अब हम बात करेंगे मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला एंड पोटाश आलम फॉर्मूला. ओके, फटाफट से चार्ट में लिखो इन दोनों के फॉर्मूले क्विकली. एग्जैक्टली श्रुति, एग्जैक्टली. आई रेड योर आंसर. एग्जैक्टली. दीज आर डबल सॉल्ट्स. पोटाश आलम इज दिस. ये हमने कब किया था ना, when we were discussing PYQs, that if potash alum dissociates how many ion is going to produce. याद है PYQ से बहुत बार पूछा गया था ये क्वेश्चन. सेम गोज विद मोर सॉल्ट, है ना? बहुत अच्छी बात है बेटा. गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट. हाँ, NH4 Fe SO4, yes, ये भी ट्वाइस है. वेरी गुड पूर्वा. एंड डॉट 6H2O. गुड, वेरी गुड. इसके बारे में पूछा गया है बच्चों. सेम, इफ इट अंडरगोज डिसोसिएशन हाउ मेनी आयंस विल इट प्रोड्यूस. सो दीज आर आस्क्ड मेनी अ टाइम्स. ठीक है, PYQ से पूछे गए हैं, मतलब आपके बोर्ड में भी आ सकता है, प्रैक्टिकल्स में भी आ सकता है. मोहर सॉल्ट तो बहुत बार पूछा जाता है. ठीक है, मैं ही पूछती थी बहुत बार बच्चों से. दिस इज समथिंग दैट यू डोंट रिमेम्बर, सो आई ऑलवेज यूज्ड टू आस्क मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला लिख दो बेटा. ठीक है, right? Okay, great. What is the salt bridge electrochemistry के practicals? I don't think you might have performed them, but it is given in your syllabus. तो पता होना चाहिए, मतलब practical syllabus की बात कर रही हूँ मैं. तो what is the salt bridge बच्चों? What is the salt bridge? सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? व्हाट इज, अच्छा कहाँ पढ़ा था सॉल्ट ब्रिज बेटा? आई थिंक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है ना हम लोगों ने ये. Salt bridge is kind of a connection. It's kind of a junction between the oxidation half cell and reduction half cell, and बेटा it is always filled with an inert electrolyte. बस इतनी बातें बोल देनी है. ठीक है, you have to say these 2-3 lines. That's it. Now I think we should move on to a little bit towards chromatography. Chromatography I was recently teaching to my class 11 students, उनके qualitative analysis, quantitative analysis topic में. So I asked them a question. RF factor तो I think सबको पता है ये formula. RF factor का full form क्या होता है? पहले तो ये बताओ. Formula बाद में देखेंगे, पहले बताओ full form क्या होता है RF factor का? What is the full form of RF factor? It's known as retardation factor. Give me a second. Huh? Yeah, it's a retardation factor. ठीक है? How do you calculate that? Distance traveled by the substance from the reference in centimeter. Distance traveled by the solvent
from the reference, again in centimeter. The second question that your examiner can throw at you is, what is the unit of RF factor? What is the unit of RF factor? It's centimeter divided by centimeter. Do you think there will be any unit? Exactly, it is unitless. No unit. It's unitless. Very good. सेकेंड एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आर एफ वैल्यू की जो वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज लेस देन 1. व्हाई? अब देखो सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा भागेगा, ठीक है, जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ेगा एज कंपेयर टू द सब्सटेंस व्हिच इज मिक्स्ड विद द सॉल्वेंट, राइट? सो बिकॉज सॉल्वेंट का जो डिस्टेंस ट्रैवल रहेगा वो हमेशा ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू द सब्सटेंस, दैट्स व्हाई द आंसर इज ऑलवेज लेस देन 1. ओके, द आंसर इज ऑलवेज लेस देन 1. The solvent front moves faster as compared to the substance. ठीक है? That's RF factor. Whatman filter paper. अब this filter paper you must have heard in chromatography only. तो मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि मतलब कैसे क्या करना है. I'm just asking what is it made up of. ये मैंने आपको नहीं, आई मीन क्लास 11 के स्टूडेंट्स को पढ़ाया. दैट मींस इट वाज इन योर क्लास 11 सिलेबस, बट प्रैक्टिकल तो अभी है ना, क्लास 12 में प्रैक्टिकल है टू परफॉर्म. वॉटमैन फिल्टर पेपर इज मेड अप ऑफ मोस्टली सेलुलोज. थोड़ा थिक होता है एज कंपेयर टू द नॉर्मल फिल्टर पेपर. ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, राइट? इट्स लाइक अ मोर फाइनर वर्जन ऑफ कॉटन. ब्यूरेट इन KMnO4. ब्यूरेट देखिए ना सभी ने, अभी मैं दिखा भी दूंगी. Titrations must have a glass stopcock. Why? Most of the burets contain rubber stopcock, but जब हम KMnO4 की टाइट्रेशन करते हैं ना तो उसमें रबर वाला stopcock हम नहीं यूज कर सकते हैं. Why? KMnO4 is a very good oxidizing agent. तो इसका एक्शन रबर पर आता है एंड धीरे 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 हमारे पास जो रिएक्शन होनी शुरू हो जाती है. अब इफ KMnO4 इज रिएक्टिंग विद रबर, ऑब्वियसली बेटा आपकी कैलकुलेशन से डिफरेंस तो आए गई. You want that KMnO4 should react with the amount present in the conical flask, है ना? उससे रिएक्ट करवाना चाहते हो ना कि बीच में भी कुछ आ जाए तो चलेगा, तब हमारी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी. That's why we always use glass stopcock, ठीक है, which does not react with KMnO4, right? So KMnO4 attacks on the rubber. That's why we do not use it in the KMnO4 titrations. What is mother liquor? ये भी मुझसे पूछा गया था. What is mother liquor? अच्छा, क्रिस्टलाइजेशन सबने की है. तो जब बेटा क्रिस्टलाइजेशन में क्रिस्टल्स को हम अलग कर देते हैं, व्हेन इट कम्स आउट एंड यू सेपरेट द क्रिस्टल्स, द रिमेनिंग लिक्विड इज नोन एज मदर लिकर. मदर लिकर इज आल्सो नोन एज स्पेंट लिकर. ठीक है, यूजुअली इट इज यूज्ड इन शुगर इंडस्ट्रीज. आई मीन दिस टर्म इज यूज्ड इन शुगर इंडस्ट्रीज. ब्राउन रिंग टेस्ट, इसको तो ना 2-3 स्टार लगा लो, बहुत सारे और स्टार्स लगा लो. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्राउन रिंग टेस्ट बच्चों. यहाँ पे मैंने दिखाया भी हुआ है जैसे कैसे ब्राउन रिंग बनती है ना बच्चों. इट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट इन द सैंपल. ठीक है, इट गिव्स यू अ नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स. दीज आर द रिएक्शंस. रिएक्शन मे बी आस्क्ड, मे नॉट बी आस्क्ड, कुछ कह नहीं सकते, तो यू शुड रिमेंबर इट. ऑल्दो यू विल बी रिमेंबरिंग इट फॉर योर प्रैक्टिकल नोटबुक में तो लिखोगे, तो ये एक्शन याद करनी पड़ेगी ब्राउन रिंग टेस्ट की. एंड दिस इज यूज्ड टू टेस्ट हुज प्रेजेंस? नाइट्रेट प्रेजेंस. ओके, दिस इज यूज्ड टू टेस्ट नाइट्रेट आयन प्रेजेंस. ये नाइट्रोसिल कंपाउंड बन जाता है बच्चों, विच गिव्स दिस काइंड ऑफ ब्राउन कलरेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. कैरेक्टरिस्टिक कलर, कभी आप किसी का सॉल्ट देखो या किसी का कंपाउंड देखो तो उसका हमेशा कलर होता है. कभी कभी आई मीन समटाइम्स दे हैव अ कलर. तो कलर से देख के आप कैसे बता सकते हो कि दैट मे बी इन दिस पर्टिकुलर केटायन इज प्रेजेंट. तो कलर से आप बता सकते हैं इफ इट इज ब्लू,
Mostly copper का ion होता है. If it is light pink, manganese. If it is light green, Fe2 positive. It is blue, red, violet, or pink. It can be cobalt 2 positive, or if it is bright green, it can be nickel 2 positive. तो कैरेक्टरिस्टिक कलर पहले तो आप लिखते हो ना टेस्ट ओडो कलर, है ना, वो वाले टेस्ट की बात हो रही है जब आप लिखते हो इन दी सॉल्ट एनालिसिस, कि जब हमने स्मेल किया, जब हमने देखा इस कलर का था, दीज आयंस कैन बी प्रेजेंट, मैं वही वाली बात कर रही हूँ. ठीक है, ये आ गया बच्चों आपका एपरेटस. दिस इज ऑल दी एपरेटस. इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. इसमें सब कुछ बताया हुआ है, इसको एक बार देख लेना. व्हाट इज व्हाट. ठीक है, ये देखो, ये रही आपकी ब्यूरेट. ठीक है, ये रही आपकी पिपेट. तो ये आपको सब पता होना चाहिए. इसकी जगह आप लिखो कोनिकल फ्लास्क. ये वायर गॉज है, रिंग स्टैंड है, दिस इज स्टोंग, दिस इज टेस्ट ट्यूब होल्डर, दिस इज बर्नर, दिस इज क्लैम्प्स. ये सब आपको पता है. ठीक है, दीज यू ऑल नो. कभी कभी नाम एकदम से याद नहीं रह जाता. दिस इज आरबी फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क. ठीक है, फिर तो और भी अच्छा है आयुष. मतलब और कम है आपके लिए टू प्रिपेयर. आई एम टीचिंग यू अकॉर्डिंग टू सीबीएसई. देखो, जो सीबीएसई ने बोला है मैंने उस अकॉर्डिंग पढ़ा दिया. आई नो स्कूल्स बहुत ज्यादा सिलेबस डिक्रीज कर देते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस, कि ज्यादा प्रैक्टिकल बच्चे अटेंड नहीं कर पाते, जो भी है. ठीक है, वो स्कूल स्कूल पे डिपेंड करता है. सो बट आई एम टीचिंग यू कि इसके बाहर कुछ नहीं पूछ सकते. दिस इज दी मैक्सिमम. इससे कम पूछेंगे चलेगा, बट इससे बाहर कुछ नहीं पूछ सकते. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. दैट वाज द एम ऑफ दिस सेशन. Okay, so I hope you have taken the screenshot bachcho, and that concludes this class. I hope that you did like this class bachcho. जाने से पहले I just want to tell you one more thing students. Today I am doing a marathon session in the special classes at 6 p.m. in which we are revising complete inorganic chemistry, meaning DF block elements and coordination compounds. These two chapters completely A to Z we are revising in today's lecture at 6 p.m. one and a half hour, 1.5 hour minimum तो लगेगा ही मुझे. तो 1.5 hour की class होगी बच्चों, and everybody is supposed to join. I mean everyone. Okay, right? So बच्चों, बोर्ड एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, सबको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, एंड आई थिंक लेस देन 30 days are left. You all want proper revision, so that's why we have come up with the one shot revision batch plus sample paper for PCMB and for PCM plus CS, and as you can see I'm a part of this batch. And बच्चों, we are starting with physical chemistry revision now. ठीक है, अब हम फिजिकल केमिस्ट्री रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों from the coming week, and I am inviting you all to join बच्चों. So this is available for the commerce student as well, and in medium of delivery Hindi also it is available. So बच्चों, if you join our platform, you are getting proper guidance, regular classes and everything. And to obviously give a weight on these claims that we are making, I'm very happy to announce that we have produced 99.4% scorer, which is the highest scorer, which was from the Unacademy only. 965 plus learners secured more than 90% marks. 320 plus learners secured more than 95% marks, and 155 plus learners secured different 100 marks in different subjects. So you all can be the next star achiever. बच्चों, आपकी फोटो यहाँ पे लगेगी. So all you have to do is just be very regular. आपको क्लासेस में रेगुलर रहना है. आपको I will just get back to you Ravi on this. You have to be regular in classes. You have to be regular in the revision. आपको बहुत रेगुलर रहना पड़ेगा, because now just less than 30 days is left. ठीक है, तो उसके लिए भी एक मैं स्ट्रैटेजी सेशन लेकर आ रही हूँ बच्चों ऑन टुमारो संडे एट 10:30 AM. ठीक है, 30 days का स्ट्रैटेजी सेशन आपके लिए लेकर आ रही हूँ. बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है. एंड इफ यू ऑल्सो हैव सम काइंड ऑफ डाउट्स, अभी स्ट्रेस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, यू कैन शेयर विद मी इन दैट क्लास. सो टुमारो 10:30 AM आई एम इनवाइटिंग ऑल ऑफ यू टू जॉइन ओवर देयर एज वेल. सो बच्चों, टुमारो वी हैव दी tomorrow is 22, right? January 22. Tomorrow is the last AITS mock test paper for you. This is absolutely free of cost. You can enroll in this by using my code KhushiSLive. Practice free mock test video solutions are provided to you. All India rank will be given to you.
So real exam like experience timings are either 9 a.m. or 3 p.m. Whichever slot is more feasible to you, you can attempt in that. And top 100 performers will be winning up to 50% scholarship. So, Bacho, for the plus, and we have two subscription platforms for the plus. We are giving live classes, weekly tests, structured courses, unlimited access to all the courses. Ask her out feature we are giving, DPPs we are giving, Bacho. And Bacho, we are, we have the raise hand feature also in which you can talk to the educator during the live class. Beta, please do not spam, bacha. Please do not spam. ठीक है? Iconic subscription में you're getting personal mentor with whom you can discuss your concerns. Study planner is also provided to you. Study material is also provided to you. Expert guidelines, test analysis, and so much more. You can get the subscription बच्चों because अब तो बहुत कम दिन बचे और आपको रिवीजन की सख्त जरूरत है. So you all can join us in the plus or in the iconic platform, whichever you feel more comfortable with. And Bacha, do not forget to follow me on the Unacademy app so that you can be a part of my community. And I'm gonna post the PDF of this class in the community only, right? And Bacha, I'm a part of Unacademy CUT channel also. And this week I take classes every Wednesday 8:30 p.m. Now, Bacha, in the upcoming weeks, I plan two very important classes for you all. थोड़ा सरप्राइज रखते हैं, आप लोग इस पे ट्यून इन करेंगे, मैं आपको लिंक भी दे दूंगी, ठीक है? बट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजा आने वाला है क्लास में. सो डू ज्वाइन ओवर देयर. So, बच्चों, for 1 month you can purchase the Unacademy Plus subscription for 3,450 rupees. For 3 months, 3,306 rupees per month. And बच्चों, these are not the final rates. If you'll apply my code KHUSHIESLive, you'll be getting yourself 10% discount. Also, बच्चों, for 3 months you can avail the iconic subscription for 5,290 rupees. And if you again apply my code KHUSHIESLive, you'll be getting yourself 10% discount. So students, from 24th January, as I've just told you, I will be starting with physical chemistry division under the same batch. And January 21, that is today at 6 p.m., we are doing complete inorganic chemistry in one shot. It will be a 1.5-hour session. I'm inviting all of you over there, right? So, Bacho, I hope you did enjoy this lecture. अब तो आप लोग डिजर्व करते हो भाई, राइट? एग्जैक्टली आयुष, एग्जैक्टली. अब तो आप लोग डिजर्व करते हो ना. अब तो देखो एंड आ चुका है बिल्कुल. एंड आई वांट कि आपकी मैक्सिमम प्रिपरेशन रहे. मेरी साइड से मैं को कभी छोड़ना ही नहीं चाहती हूँ. लाइक वी ऑल एट एन अकेडमी, वी डू नॉट वांट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड फॉर यू. जितना भी है वी आर गिविंग ऑल इन नाउ, ठीक है? वी आर ऑल इन, वी आर ऑल टुगेदर इन दिस. एंड वी प्रॉमिस यू दैट वी आर गोइंग टू गिव आवर बेस्ट टू यू सो दैट यू कैन सिक्योर मैक्सिमम मार्क्स अप टू योर पोटेंशियल इन द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन. अब बच्चों, बोर्ड एग्जामिनेशन को हल्के मत लेना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता है आपके जेई का क्राइटेरिया 75% है, मतलब उससे कम आए तो आप जेई में भी नहीं बैठ सकते हो. सीयूईटी में आपके मार्क्स कंसीडर होंगे. कभी चलो आपने यहाँ पे नहीं पढ़ना, आपका फॉरेन जाने का प्लान है, वहां पढ़ने का प्लान है, वहां पे भी आपके सारे सर्टिफिकेट देखे जाएंगे. तो क्लास 12 के परसेंटेजेस को आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हो. तो अभी तक नहीं पढ़ाई शुरू करिए, ज्वाइन अ प्लेटफॉर्म अब अभी से शुरू करो बच्चों. एंड ज्वाइन, आई मीन स्टार्ट इट प्रॉपरली ना. आपको गाइडेंस मिलेगी तभी तो आप प्रॉपरली रिवीजन करोगे. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू ज्वाइन अस ओवर देयर बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री की रिवीजन स्टार्ट हो रही है बच्चों. एंड सबको पता है फिजिकल केमिस्ट्री में तुम लोगों को प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल्स में, तो मेनली हम लोग उसी पे फोकस करने वाले हैं. एंड यू ऑल नो, जब भी मेरी रिवीजन क्लासेस होती है मैं कितना डिटेल में पढ़ाती हूँ. नोट्स आर प्रोवाइडेड टू यू, एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन इज गिवन टू यू, क्वेश्चंस आर सॉल्व फ्रॉम एनसीईआरटी एंड फ्रॉम अदर सोर्सेज, सैंपल क्वेश्चन पेपर, पीवाईक्यू, सब कुछ तो सॉल्व होता है बेटा. सो आप क्लासेस से लगा रहे हो ना, यू आर एक्चुअली गिविंग, यू आर एक्चुअली डूइंग मोर देन इनफ बिकॉज आई टीच फ्रॉम एटलीस्ट 3 बुक्स एंड फिर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है? So I just want the best for you all. We want the best for you all, bacho. So do join us in our platform and do subscribe to our channel also, this channel as well as the others. I hope that you did like this lecture. If you did, please give it a big thumbs up, bacho, and share it with your friends as well. Thank you for joining in today. I will see you at 6 p.m. now. Who all are going to join me at 6 p.m.? ठीक है बच्चों, 6 बजे मिलते हैं अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैराथन सेशन के साथ, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, सी यू वेरी वेरी सून.